Yes, dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will tell you something about some terms which we have in fiqh, and those are called fiqhi istilahain. And we have farz. Farz is the order of Allah which is compulsory. One who objects farz becomes kafir, becomes non-Muslim, because he openly objects or rejects or even does not make the amal according to that very command, that is farz. Farz is indeed the order of Allah, and it is clear order. And number two, we have wajib. Wajib is also the great order, but yeah, if one rejects it or do not accept it, he may be called the fasik, the fajr, but not the kafir. uh, we have so many examples of wajib. Overall, I'm telling just some little things in this very video, because the video will be then very long. Then we have sunnati muqaddah. Sunnati muqaddah is simply that sunnat which is very important, and which was done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam very often. For example, we have two rakat of Fajr Sunnah, that is Sunnat Maukada. Yeah, or we have Miswak, Miswak. Just this, and this is Sunnat Maukada. Sunnat Gair Maukada is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was doing sometimes, and sometimes it was being left. For example, and the order is same for we people too. For example, we have four rakat of Sunnah in before Asr Farz namaz. And we have yet another category of uh, type of amal, that is uh, mustahab. Mustahab is also okay if anyone does it, and he will get sawab. Then we have nafal. Nafal is also positive. Nafal is important. We have so many kinds of nafal namaz, and one can perform it and ultimately gain the sawab. Then we have yet another, that is mubah. Mubah is neither positive nor negative. It is neutral. It is neutral. And mubah is something which is allowed in Islam, but if it is up to niyat now. If one does the positive niyat, then ultimately one will get the sawab. If one does the negative niyat, then ultimately even mubah can be dangerous or sinful. For example, मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई गुलमर्ग जाना चाहेगा, तो वहाँ पर गुलमर्ग वो देखेगा कैसे पहाड़ है, कैसे अल्लाह की कारीगरी है, मैं अल्लाह की शान देखूंगा, मैं अल्लाह का बादल देखूंगा, मैं अल्लाह के पहाड़ देखूंगा, जंगलात देखूंगा। तो गुलमर्ग जाना तो मुबाह था, न सवाब था न गुनाह था, लेकिन जब उसने नीयत की कि मैं अल्लाह की कारीगरी को देखूंगा, तो ये सवाब बन गया। और अगर खुदा न खास्ता उसने ये नीयत की कि मैं वहाँ जाकर गुलमर्ग जाकर मैं खराफात करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा गड़बड़ करूँगा, और उसकी नीयत भी हो जाएगी, ज़बरदस्त नीयत होगी, यानी हालांकि इसने अभी नहीं किया है, लेकिन इसकी नीयत है, डेंजरस नीयत है, तो वहाँ जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा फिर। तो यानी वो नेगेटिव बन सकता है। हालांकि मुकल्लिफ तो वो फिर बन जाता है जब वो कोई बुरा काम करेगा, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इसकी नीयत अभी ख़राब है, लेकिन इस ख़राब नीयत पर भी मतलब उस पर पकड़ हो सकती है। तो इसके बाद है और एक टर्म, uh, that is haram. Haram is itself the order of Allah. For example, we do not have the interest, the sood, or the riba, and that is haram. For example, we cannot take the alcohol being Muslims, and that is haram itself. Number two is the conditional haram. The conditional haram is that very haram which is halal for owner. And if one steals these apples, for example, these apples or these things then becomes, these apples then becomes haram for the
thief, haram for another people who takes these things from the owner without his permission, और दे सिंपली स्टील इट। हाँ, जब कोई चोरी करेगा, किसी का माल ले जाएगा, फॉर एग्जांपल जो सेब था या कोई खाने का चीज़ था, वो तो इटसेल्फ हराम नहीं था, लेकिन जब उसने वो चोरी किया तो ये चोरी का माल बन गया, और उसने अगर वो इस्तेमाल किया तो उसके लिए वो ये हराम है। ओवरऑल ओवरऑल इस तरह है कुछ ऐसा। तो इसके बाद और एक पॉइंट है, दैट इज़ मकरू तहरीमी एंड मकरू तंजीही। एक तो बड़ा मकरू हो गया, दूसरा तो छोटा मकरू हो गया। यानी हमें कोशिश करनी है जो मकरू की चीज़ हैं उनसे बचने की कोशिश करनी है हमें, ताकि हमको सवाब अच्छा मिले, ताकि हमको कोई गुनाह ना मिले, और ताकि हम हमारी जो ज़िंदगी है वो तकवा वाली रह जाए। और इसके बाद और एक चीज़ है, दैट इज़ अजीमा, दैट इज़ रुक्सा, देन वी हैव मशकूक। मशकूक उस आइटम को कहते हैं जो हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है, अलबत्ता हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तकवा पर आता है। लिहाजा अगर हम तकवा वाले हैं तो हमें छोड़ना चाहिए। तो ओवरऑल ये कुछ बातें थी फ़र्ज़ के बारे में। अलबत्ता फ़र्ज़ में मैं एक बार फिर मैं बताऊँगा, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 5 नमाज़ें हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, जो बालिग हो, जो अक्लमंद हो, जो ठीक ठाक हो, जो कोई गुलाम वगैरह ना हो। अलबत्ता जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया उसी पर ज़रूरी होता है जो जिसके लिए ऐसे आइटम्स मुहैया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जनाजा कहीं पर है तो उसको फुर्सत भी है, मतलब वो वहीं पर खड़ा है, वो कोई करीबी रिश्तेदार है, उसके लिए वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर बस्ती में कोई ऐसा शख्स है जो बहुत बिज़ी है, या वो उसने ऐलान नहीं सुना है, या वो थोड़ा दूर है, या उसको वहाँ से जाने में कोई नुकसान हो जाएगा, तो अगर कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो कुछ लोग कोई रह जाएगा, तो वो उसके लिए फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी मैं कहूँगा वहाँ पर एक रिलैक्सेशन है। तो ओवरऑल मैंने ये चंद बातें आपसे शेयर की हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई हैं। हालांकि मैं अभी बैठा हुआ था एक जजना में मैं बैठा था, और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत खदमत की। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।